Doctor's journal entry. This poem is an anti-war poem, a poem that emotionally talks about the effect of nuclear warfare. So I'm making this video during the time when Oppenheimer is released, the movie by Christopher Nolan. So the movie talked about bomb. The poem talks about the effect of the bomb. And it does not talk about the factual effect of the bomb. It talks about the emotional effect of the bomb that was dropped by USA on Japan on 6 and 9 August on Hiroshima and Nagasaki. So this poem is about how devastating and dangerous can be nuclear warfare. So here the poem is not about explanation. It's about evoking the feeling. It's about trying to have an empathy with people who are so utterly lost. It's a holocaust. So here, apparently, the author seems to have used black humor. He's saying everybody's running naked, nobody's feeling shy. So when I teach this to kids, some of them smile and it becomes a fun. But at the sub-level, the deeper level, in that smile, in that fun that everybody is running naked, there is a extreme pain that most people probably can relate to it. So let us study this line by line. It's a poem. It's an evocative poem. It evokes the emotion. It is not a statistical poem. कितने लोग मरे, कितने लोग, the history का किताब हो जाएगा. ये literature का poem है. It is trying to humanize the facts. So the morning stretch comes. So there is a narrator. No, he's a doctor. Okay, it's a doctor's journal entry. So a doctor, an imaginary doctor. So this he is a narrator. एक डॉक्टर है जो जापान में रहता है, जापानीज डॉक्टर है. So जिस दिन हिरोशिमा पे यूएसए ने बॉम्ब गिराया था by the president US Truman to stop the second world war. So उस दिन का ये घटना है. The story, this incident is about that particular time. So everything is narrated by a doctor in Japan. जिस दिन हिरोशिमा पे एटम बॉम्ब गिरा था, ये उसका इमोशनल फील है. So the morning was there and the morning stretch calm. So here the word stretch calm is not for the morning, it's for the narrator. So the narrator was lying calm in a beautiful morning. The morning was warm, अच्छा warm था, beautiful, खूबसूरत, सुकून वाला माहौल था. Okay, everybody was living the normal life. The narrator is saying, I was half clad. आधा कपड़ा पहना था, रात को सो के तो कोई टाई कोट नहीं पहनता. So ये भी हम लोग इंडियन कंसेप्ट में बोले तो हाफ पैंट गंजी पहन के सोया. I mean, in the Japanese sense, he must be wearing half dresses that normally people wear to sleep. So the morning was very calm and the narrator was stretching himself on the bed. Okay, so he was looking out at the garden from his window. So the narrator is a doctor. The morning is very calm and beautiful. The narrator is lying on the bed and he is looking out at the garden through his window. So there are shimmering leaves, shining leaves, and there are shadows all around. So बहुत अच्छा माहौल है. Sunlight is falling on the leaves, the shadow all around. Suddenly, a strong flash and then another and startled me. Narrator is saying, अचानक एक flash हुआ. Okay, those who have seen Oppenheimer, it relate to it कि जब बॉम्ब गिरा था, so movie में, उस movie में दिखा रहा था. So there was a small, not small, sorry, very mistake, very big flash, and then it startled me, surprised me. So actually, the poem is dividing the incident into very, very minute seconds. मतलब ये
15 सेकंड का डिस्क्रिप्शन पूरा पोएम में एकदम स्लो मोशन में. सो पहला में क्या हो रहा है, फर्स्ट सीन, कैमरा स्टार्ट्स, द हीरो ऑफ द पोएम इज लाइंग ऑन द बेड वेयरिंग हाफ गंजी जंगिया काइंड ऑफ थिंग, I mean half pant, half dress. यहाँ लिखा हुआ half dressed, scrolling, relaxing. Who's looking out of the window? Camera zoom हो रहा है, दिखा रहा है सामने में बहुत ही एकदम शांत माहौल है, और पत्तों का सिमरिंग माने शाइनिंग लीव्स इज देयर, और जहाँ शैडो है कहीं धूप है तो कहीं छांव है, रिलैक्स माहौल. अचानक there's a flash of lightning and then the narrator is saying it startled me, surprised me. I saw the old लालटेन brightly lit. That is saying क्या ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा लालटेन जल रहा. मैग्नीशियम फ्लेम्स. Narrator is saying कि ऐसा लग रहा था कोई मैग्नीशियम का कोई आग जल रहा. While I debated it, narrator is saying कि क्या है, मैग्नीशियम फ्लेम है कि क्या है, लालटेन जल रहा है क्या है. Within this 1/10 of a second, अब ये सोच ही रहा था, अचानक रूफ फेल, बिल्डिंग का रूफ गिर गया, वॉल गिर गया, एंड इट सीम्स द होल वॉल कोलैप्स्ड. ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही कोलैप्स हो गया. इंसान जहाँ रहते हैं ना, मतलब जहाँ तक उनका विजन जाता है, वो रिलेट कर पाते हैं, उनके लिए वही दुनिया है. अगर ये अभी बिल्डिंग धंसे तो उनको लगेगा दुनिया ही धंस. सो नरेटर was relaxing on his bed wearing half his dress in a very हम लोग इंडियन कंटेक्ट में संडे वाले मूड में खिड़की से बाहर देख रहा है, रोमांटिक एटमॉस्फेयर है, सनलाइट है, कहीं कहीं शैडो है. अचानक बहुत बड़ा स्पार्क होता है, ऐसा लगता है कोई लालटेन, एक बहुत हजार पावर का लालटेन जल गया. अभी मैं तो सोच रहा मैग्नीशियम फ्लेम में क्या है, इतने में द रूफ फेल, द वॉल फेल, एंड इट सीम्स द वॉल कोलैप्स मैंने इन टिम्बर एंड डेब्रिस. तो लकड़ी का था तो ऐसा लग रहा था चारों तरफ टिम्बर और डेब्रिस, मतलब होता है द ब्रोकन पार्ट ऑफ ए हाउस इज कॉल्ड डेब्रिस. चारों तरफ डेब्रिस हो गया, डस्ट स्वेल इन अराउंड, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, डस्ट चारों तरफ है. एंड इन द गार्डन नाउ weird, my drawer and under sir debate. So narrator is saying कि जो मेरा ड्रॉयर था, हाफ पैंट, अंडर शर्ट, ये सब अचानक गायब हो गया. A splinter jutted from my mangled thigh. Narrator is saying कि एक splinter, एक लोहा उसके थाई में डूब गया. Jutted when I entered into his half और almost totally destroyed thigh में, mangled में destroyed thigh में एक बहुत बड़ा लोहा घुस गया. My right side bled. Narrator के बॉम्ब जो लगा था इस साइड लगा, जैसे वो डार्क नाइट में व्हाइट नाइट को हुआ था. So his half side is totally gone, bled, ऐसे खून निकल गया. Cheek was torn, ये सब फट गया. I was dislodged, detached. Okay, dislodged मतलब जहाँ से था वहाँ से हट गया था. He was removed from his place, and there was piece of glass all around. Okay, बॉम्ब का टुकड़ा चारों तरफ था. The narrator suddenly finds that the building has collapsed. The timber, लकड़ी के सब चारों बिखर गए, डेब्रिस में बिल्डिंग का टूटा पार्ट है, चारों तरफ धुआं धुआं है. So narrator is saying कि मेरे ड्रॉयर, मेरा अंडरशर्ट सब गायब हो गए. इतने में एक स्प्लिंटर, मतलब एक लोहा का टुकड़ा उसके थाई में चला. Narrator is saying कि ये सब हो क्या रहा है, इसका लाइट साइड ब्लीड हो रहा है. I was dislodged, detached, and a piece of glass, all wondering what had come to pass. Narrator was saying, thinking कि ये सब हो क्या. Where was my wife? Alarm! I gave a shout. The narrator, while he was still in a half able to decipher, understand what is going on, he thought alarm was चौंक के पूछ रहा अपने वाइफ को, जापानीज लोग, जापानीज नेम. My wife, Yokasan उसके वाइफ का नाम. Where are you? The moment narrator said this, the blood gushed out. ये सब तो फट गया. तो the moment he gave force, मतलब मुंह से खून आने लगा. The artery came to his neck. यहाँ का जो कुछ भी था सब यहाँ से यहाँ आने लगा. Of course, it seems like an exaggeration, but Hiroshima Nagasaki was not an exaggeration. It's one of the most painful thing that happened in human history. It is one of the most devastating thing that could ever human being imagine. I have read in books that अभी भी Hiroshima Nagasaki में vegetations नहीं होता, kids are born abnormal after so many years. 1945, sorry, more than 50
70 years. So in that moment, artery came to my vein. मतलब ये artery neck पे आ गए यहाँ पे, शायद इससे ज़्यादा ही हुआ. So blood gushed out. Okay. Now the students asked me, sir, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? Of course मरने ही वाला है. As I told in the beginning, it is 10-second description elongated into a poem. So मरेगा, मरने में तो 4, 5, 10 सेकंड 8 सेकंड लगते हैं. So blood came through his mouth. So artery came to his neck. He was scared from it. He was afraid of his life. I called out. और चिल्लाया, panic stricken to my wife. I चिल्लाई, योगा सर. उसकी wife का नाम. So pale, blood-stained, frightened. Okay, he's looking very dull. चारों तरफ खून लगा हुआ है. डरा. योगा came, holding her elbow. मतलब उसके elbow वहाँ से उड़ गया है. मतलब detach हो गया. तो अपने elbow को पकड़ के डाल दी. And the wife is saying, "We'll be fine." The narrator is saying to his wife, "We'll be fine." Actually, nobody will be fine now. So we will be fine वाला situation है ही नहीं. Atom bomb गिरा है भाई कोई. ये खानी पड़ा था नहीं है. This is not the Diwali cracker. This is an atom bomb. Okay, dropped by America on Hiroshima and Nagasaki. But the husband is saying to his wife, like all husbands say, "We'll be fine, don't worry." I urged, I said, "Let us go out quickly." Saying, "चलो बाहर चलते, जल्दी से कोई इलाज कराते, कोई डॉक्टर के पास जाते." Stumbling on the street, so जैसे वो लोग स्ट्रीट में निकले, किसी का धक्का लगा. So वो लोग गिर गए. We fell, tripped at something. ट्रिप में पैर में कुछ लगा तो लोग गिर के क्या देख रहे हैं? Let us say gas struck. When I take a deep breath, and I saw it was a head. Let us say किसी चीज में मेरा पैर का धक्का लगा तो देखें एक तो मुंडा पड़ा हुआ. मैंने ह्यूमन का ये आधा नसा. Excuse me. अरे वो क्या एक्सक्यूज करेगा? वो तो डेड बॉडी है. बट ही इज डेड. तो नरेटर इज सेइंग कि जब वो घर से निकले जाने के लिए हॉस्पिटल या कहीं भी इलाज करने के लिए, कोई नर्सिंग होम कुछ भी, तो अचानक वो लड़खड़ा के गिरे तो उनके पैरों में एक इंसान का सर था. सो सर को बोले, "प्लीज एक्सक्यूज मी हटिए." लेकिन कैसे हटे, तो मर चुका. एक गेट हेड क्रैश्ड हिम. मैंने वो भाग रहा था, गेट उसके मुंडी पे गिरा और वो मर गया. There we stood afraid. Narrator is saying हम लोग को डर लग रहा था, क्या करे ना करे. A house tilted before us. सामने में एक घर ऐसे ऐसे हो रहा था, वो गिरने वाला. It swayed when I moved one side to the other. It toppled and crashed. गिरा और crashed हो गया. Fire sprang in the dust. चारों तरफ आग फैल गया. जब ये बिल्डिंग गिरा था. Okay, spread by wind. It dawned on us we must get to the hospital. Narrator is saying कि अब नाटक को रियलाइज हुआ कि हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए. क्यों? 2 रीजन थे हॉस्पिटल जाने के. एक तो ये नरेटर अभी कोई पेशेंट है और ये खुद एक डॉक्टर है. सो इन दिस क्राइसिस सिचुएशन he should go as a doctor to help people, but right now he's more a patient than a doctor. तो ये क्या किसी का मदद करेगा? इसका तो बुक में लिखा, the artery came to his neck and his wife is holding her elbow. It dawned when a sudden realization. He realized that we must go to the hospital. We needed aid. And should I help my staff too? क्या मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि डॉक्टर तो मैं हूँ, दूसरों का हेल्प करूं? Okay, this thought made me sense to me. I wonder how could I? And it says कि हम कैसे अपने स्टाफ का हेल्प करें एज अ डॉक्टर? हम तो खुद ही पेशेंट. My legs gave way. Narrator बॉम्ब गिरा है भाई, so his leg could not move. मतलब अब यहाँ सब चला गया है, लेग हिल नहीं रहा है. So it is the last 3 seconds before death. 3, I'm just saying, it's a rough calculation. I sat down on the ground. Narrator is saying कि पैर तो हिल ही नहीं रहा था. Narrator जमीन पे या रास्ते में अचानक वहाँ सबको प्यास लगी. मतलब बॉम्ब गिरने से शायद प्यास लगी. But no water could be found. Narrator is saying कि ऐसा लग रहा था कि कहीं पानी ही नहीं. My breath was short. Bit by bit, my strength came. So after half second, कुछ हिम्मत आया. So narrator got. So he was still naked. कपड़ा सब बम से उड़ चुका. But I felt no shame. मतलब नंगा होकर भी कोई shame नहीं था. क्यों? क्योंकि इस particular mindset में शर्म कहाँ से है? और secondly, everybody is naked, so कैसे ही शर्म? I was still naked, but I felt no shame. This thought disturbed me somehow till I came upon a soldier. Narrator is saying कि हम ये नंगा का सोच ही रहे थे कि मेरा कुछ अंडर पैंट भी नहीं है, हाफ पैंट भी नहीं है, ड्रायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है.
So while he was thinking, he saw another soldier, okay, who gave the towel around my neck. So ये उसको narrator को towel दिया. But my leg stiff with dried blood. मेरे पैर एकदम कड़ा हो गया, खून से निकला, वो सब सूख गया, it rebelled. मैंने जो खून जमा हुआ था सब फट गया, rebelled. Like blood started gushing out. I said, Yoko san, you must go ahead. So this doctor is saying to his wife कि हमको तो लग रहा है अब हम गए, when I'm going to die. You better try to go to the hospital. You may survive. She did not wish to. मतलब वो अपने husband को छोड़ के कैसे जाए? But in distress, what choice we had? अब दोनों मर जाने से अच्छा शायद कोशिश करें कि एक जिंदा हो. So in sorrow we do not have choice. So when husband is dying, still the wife has to leave the husband and go to the hospital. A dreadful loneliness came over. That is saying कि अजीब सा एक loneliness लगने लगा. Even we all pray that when we die, we are surrounded by our loved ones, and he is dying. He knows that he will die, but he has to send his wife to the doctor, to the hospital, that she might survive. So अकेले मरने का गम बहुत अजीब होता है, शायद. So narrator knew that he's going to die. So when his wife is not there, nobody is there with him. Suddenly, he started feeling extreme kind of loneliness, a very dreadful loneliness, bhayanak loneliness. Because when we are lonely, we can go and meet somebody. When we are going away from the world, if we are lonely at that very moment, we all want to die in the lap of somebody or hugging somebody, saying goodbye, saying farewell. School में भी farewell होता है, life में तो होना ही चाहिए. And then the wife is not there even to say a normal okay. My mind ran at high speed, but my body is thinking, क्या करे. दिमाग तेज चला, लेकिन body हिल ही नहीं रहा. I saw the shadowy form of people. I was saying कि सर अजीब सा scarecrow जैसे लोग घोष के तरह सब नंगे दौड़ा भागी कर रहे. Narrator is using black humor and saying so painful thing in a funny way. It's black humor. So narrator is saying all सब घोष के तरह लोग दौड़ रहे थे. All were dumb, सब खामोश थे. Arm stretched out, मतलब सबका हाथ ऐसे था stretched, अजीब सा हो गया फिर. Shoulder to shoulder dangling, माने किसी का ऐसा लग रहा था ना कि shoulder जो है dangling हो गया, टूट गया. It took some time for me to understand the friction and the burn caused so much of pain. That is saying कुछ वक्त लगा हमको समझने में, कुछ मतलब 1-1.5 सेकेंड कि friction of the burn had caused so much of pain. उनका चमड़ा जो है सब जल गया, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है. So as I told you, it is probably 30 seconds or 1 minute maybe, or 19 seconds, or say few seconds. उसी का एकदम थोड़ा स्लो मोशन में डिस्क्रिप्शन. तो राइटर इज सेइंग कि सबका आर्म ऐसे लटक रहा था, ओके, सबका हाथ ऐसे टूटा हुआ था. राइटर इज सेइंग कि कुछ वक्त लगा हमको ये समझने में कि उनके चमड़े जल चुके हैं, इसीलिए उनको इतना दर्द हो रहा है. They feared to chap flesh against flesh. मैंने यहाँ का चमड़ा मतलब कट के यहाँ चला गया, यहाँ जला हुआ, यहाँ का चमड़ा यहाँ जला हुआ है. These two would shuffle in the blank parade towards the hospital. I was saying, हमको लगा I should also walk in the blank parade. उन्हें सब दंगा जा रहे, parade जैसा हो रहा, चल रहा, dismay. उन्हें जो चल पा रहे हैं, they are going to the hospital walking naked. Narrator saw a child, a woman with a child in my path. Narrator saying कि मैंने एक औरत को देखा, एक बच्चा था उसके साथ छोटा सा, दोनों नंगे थे, बच्चे भी और उसकी माँ भी, complete naked. Actually naked, author is saying in a funny way, means to say that the skin has been burned and the flesh has been burned, and some places have मतलब निकल के दूसरा जगह चला गया. It has come out from one place and has gone to the other. Had they come from the bath, narrator saying सब नंगा क्यों घूम रहे, माँ भी naked, बच्चा भी naked. I turned my gaze. Narrator is saying I turned my gaze. But I was at a loss that she should stand still till I came across a naked man. Narrator is saying दूसरा तरफ देखे कि वैसे क्यों, तब तक narrator is saying I saw another naked man. And now the thought rose that some strange thing has stripped us of it. Narrator is saying ऐसा लग रहा है कोई अजीबोगरीब मैजिक हुआ है और सब लोग जापान के naked हो गए. The face of an old woman on the ground was marked with something. कोई औरत मुंडी नीचे गिरा हुआ था, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था. बट शी मेड नो साउंड, वो चिल्ला नहीं रही थी, सफर कर रही थी,
ये लोगों का हाथ टूट गया था, किसी का चेहरा ही जल गया है, किसी का हाथ जल गया, लेकिन कोई चिल्ला चिल्ली, कोई बेचैनी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। साइलेंस वॉज कॉमन टू, मतलब लोग इतने ही शॉक थे, नहीं डिस्टर्ब थे, that they have gone to a level where they can't even shout. And at a surface level, they don't have the physical energy to shout. At a psychological level, they are too shocked to even say something. I had no cries of anguish, कोई चिंता, कोई किसी को परेशानी, आवाज नहीं दे रहा है, कोई एक सिंगल वर्ड में कोई आउच नहीं कर रहा है। लोग जैसे बस में करते हैं। Actually, this is a very minor pain, so people react. When the pain is so infinite, reactions are failed. मतलब मेमोरी में कोई ऐसा वर्ड ही नहीं होगा एटम बॉम्ब गिरने का एक्सप्रेशन देने के लिए शायद। Maybe the dictionary in the mind has failed. So silence was common to all of them. I had no anguish of pain. कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई एक वर्ड नहीं है. Silence is common to all of them. So here the author is saying sorrow connects all of them. And the language of sorrow, a connection, connecting people, is not Japanese, it's not Tamil, it's not Bhojpuri or English. It is silence connects one human being with the other. When we go to a funeral ceremony, you look into the eyes of people, you hold him, you don't say anything. He understands, you understand. So, आपने देखा होगा श्राद्ध में लोग कम बोलते हैं, लेकिन सब कुछ एक कनेक्ट कर पाते हैं. At least कुछ लोग तो कनेक्ट कर पाते हैं. So silence is probably a greater language than words. So author ends his poem by saying that all people were connected to one another, were connected to silence. Another important point. When, when the suffering is so extreme, words fail to express. Words have a limitation, right? Words can express to a limit. Beyond that, dictionary of fails. So the suffering is so extreme that words have become helpless, and they're saying, "Humse to na ho pai," we can't say. So you probably have to take the infinite silence to express yourself, because words are finite, right? But the pain they are feeling is infinite. And the infinite pain can only be expressed to infinite silence. Words are finite; they are too trifle for them. मतलब वो बहुत ही insignificant है उनके दुख दर्द को बताने के लिए. So through this poem, the author is highlighting the dangerous, the devastating, the holocaust of atom bomb that was dropped on Hiroshima on August 6, 1945. So this poem is not about fact, it's about trying to have that sympathy and empathy and connecting how destructive it could be for mankind. So thank you for watching the video, and if you have found this video of any help, I request you to share with your friends who might need this video. And if you have any questions, please write in the comment box. Thank you for watching the video.